Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. First off, Congress leader Rahul Gandhi had visited the Samadhi and residence of the late singer Zubeen Garg in Guwahati and had expressed deep sorrow over the untimely death. Speaking to the media after his visit, Gandhi had said that it was painful to come under such tragic circumstances. Recalling his mountaineering course in Sikkim, he had compared Zubeen Garg to Mount Kanchenjunga, honest, transparent, unshakable and beautiful. Gandhi had described Zubeen as a man of wealth, success and humility, qualities he said Assam should be proud of. He had also credited Zubeen's father for shaping his son's journey and giving a voice to the state's culture. Not only that, but calling the singer's death a tragedy for the entire state, Gandhi had said that the family's sole demand was for truth and closure. He had urged the government to conduct a quick and transparent investigation into the circumstances of Zubeen's death in Singapore, assuring full support from the Congress party. Gandhi had said he and his party stood ready to help the family in any way. He also extended condolences to the people of Assam, saying that the state had lost someone it deeply loved and admired. It's very sad for me to come here under these circumstances. I mentioned to the family that I would have liked to come under better circumstances, happier circumstances. When I was 17 years old, I went for a mountaineering course in Sikkim. And every day when we would go for training, I would see Kanchenjunga, Mount Kanchenjunga in front of us. And what I liked about the mountain was that it was honest, transparent, unshakable and beautiful. Today, while I was coming, Gaurav said that Zubeenji said that he was Kanchenjunga. And immediately it connected to me that he was Kanchenjunga because he had the qualities of Kanchenjunga. You can see the worth of a person in their house. I just came from Zubeenji's house. He had wealth, he had success, and he had humility, which is something that Assam should be extremely proud of. I told Zubeenji's father that his wisdom, his support built Zubeenji, gave a voice to this wonderful state, and that we all thank him, the entire family, and of course Zubeen Garg ji for what they have done, not just for Assam but for the whole country. I said I'm sad when I come here. It's a tragedy that the whole state has faced. I spoke to the family and they only said one thing to me, that we have lost our Zubeen, and all we want is that the truth should be clear. That we who love him so much, and the people of Assam who heard him, whose lives he changed, who also loved him, want to know what happened, and they want to know what happened because they want closure. And I think it is the duty of the government to quickly investigate what has happened, transparently investigate what has happened, and tell the family, Zubeenji's widow, his sister, father, other family members, exactly what happened in Singapore. I said that myself and the Congress party are there to support them in any way, and if there's anything we can do, we're more than happy to help.
I want to offer my condolences to the people of Assam who have suffered this cruel blow without expecting. From the blue, you lost someone so important, someone you love. I stand with you in your grief. Thank you. I don't want to digress. I don't want to take the discussion away from offering condolences, from telling the people of Assam that we love Zubeen Garg. We want to honor him. We wish to honor him. But first, we want transparency and justice. What happened in Singapore, everybody in Assam should know it. And the sooner it happens, the better it is. Thank you very much. The Tripura Pradesh Youth Congress had demanded the immediate cancellation of the upcoming Health Department recruitment examination, citing large-scale irregularities and a lack of transparency in the selection process. Youth Congress Presidential Neel Kamal Saha had said that over 18,000 job seekers had applied for just 85 posts, with the exam scheduled for October 25 and 26. He had alleged that the process violated the 2018 state employment policy, which mandates the publication of exam syllabus and the use of OMR sheets for written tests. Recalling a similar recruitment controversy in 2021, Saha had warned of a repeat malpractice, claiming that early exams were held on plain paper without declared syllabus. The Youth Congress had urged the government to cancel the current notification and issue a fresh one to ensure transparency and fairness. আমরা ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছিলাম যে শিক্ষা দপ্তর থেকে 85টি পোস্টে শিক্ষিত যুবকদের নিয়োগের ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন এবং 18ই মে পর্যন্ত আমাদের কাছে যতটুকু খবর আছে 18,000-এরও বেশি যুবতীরা, শিক্ষিত যুবতীরা এই নিয়োগে আবাস দিয়ে তারা ফর্ম জমা করেছে। কিন্তু 2018-র যে নিয়োগ নীতি, সেই নিয়োগ নীতি অনুযায়ী যখনই এরকম টেকনিক্যাল পোস্টের জন্য ভ্যাকেন্সি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসে, তার সাথেই ওএমআর শিটে পরীক্ষা হবে এবং সিলেবাসটা ঘোষণা করে দেওয়া হয়। আমরা দেখেছিলাম 2021-এর যে বিজ্ঞপ্তি ছিল, 2024-এ যে পরীক্ষা হয়েছে, সেখানেও ওএমআর শিটে পরীক্ষা না হয়ে সাদা কাগজে পরীক্ষা নিয়েছে এবং দুর্নীতির দিকে এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা কালকেও ডাইরেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম, উনি ছিলেন না। ওনাকে তারপরে যখন ফোন করেছি, উনি আজকে আমাদেরকে 2টোর সময় টাইম দিয়েছিলেন। আমরা এসছি, ওনাকে বলেছি যে পরীক্ষা যাতে ওএমআর শিটেই হয় এবং এখন পর্যন্ত 25-26 তারিখ অক্টোবরের পরীক্ষা, এখন পর্যন্ত সিলেবাসটাও দেওয়া হয়নি। আমরা বলেছি অতি সত্বর যাতে এই পরীক্ষার ডেট চেঞ্জ করে সিলেবাস এবং ওএমআর শিটে পরীক্ষা হয়, সিলেবাসের সাথে যাতে আবার নতুন করে ডেট দেওয়া হয়। কারণ এইভাবে করেই এই যে ডেট দেওয়া হচ্ছে না, এই যে সিলেবাস দেওয়া হচ্ছে না, একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে আবার এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটাকে দুর্নীতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এই সরকার এবং সরকারের সাথে যুক্ত এই স্বাস্থ্য দপ্তর। আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের ডাইরেক্টরকে বলেছি এবং আমরা দেখেছি যে ওরা ওএমআর শিটে পরীক্ষা নেবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে। তৎসাথে আজকের মধ্যেই যাতে সিলেবাস ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হয়, তার জন্য আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। Chief Minister Conrad K. Sangma highlighted the state's significant investment in education, revealing the government spends Rs 1,967 crore annually on teachers' salaries. This includes 684 crore for government school teachers and 917 crore for ad hoc teachers, alongside grant in aid support for over 4,000 private schools across the state. Speaking at a Platinum Jubilee closing ceremony of Nokrum Government Upper Primary School in East Khasi Hills, Sangma reaffirmed education as a top priority, linking investment in infrastructure, teacher training and youth-focused initiative and overall human capital development. They congratulated the school on 75th anniversary, praised teachers and students for their contributions and assured the committee and the whole community that the proposal to upgrade the school to secondary or higher secondary level would be examined. He also contributed to additionally support smart classrooms, computer rooms and musical instruments under the Chief Minister's Special Development Fund, which was announced. Director of School Education B.J. Karsandi emphasized the importance of teacher quality and commitment in maintaining high educational standards. Shri B.J. Karsandi, Director, Directorate of School Education and Literacy, a warm welcome to each and every one of you with wisdom, dedication and commitment.
inspiring dreams, and building bright futures. Shri Vijay Karshandi. To ex-MLA Lambor Mariam. Thank you, Madam. Respected Sir, I now It is one of the most important social sectors in our economy or in any state for that matter. So what is important for us is that we have to understand that the education system in our state is devised in such a way that the teachers that the government is recruiting are the best teachers or the most qualified teachers, because they have to undergo a very, very rigorous enrollment process or a rigorous, you can say a recruitment exercise for which they get into the government schools. So therefore, we're very, very happy that our Honorable Chief Minister is taking a lot of interest, is taking keen interest towards education in our state, and we will hear more from Sir when Sir addresses all of you later on. So what I would like to say is that we understand that teachers... Yeah, I remember a late J.D. Rambai, the former Chief Minister of our state. He visited Nongkrem during the big program held at Unitarian Church. And today, we're having you here with us as young and dynamic leader of the state. We look forward that, and we have also witnessed the activities that was taking place, the infrastructure. You talk about developing the schools, and yesterday in the cabinet, I think you have come up with something else. That is the biggest mission mode. The Airport Authority of India at Imphal Airport has issued a travel advisory for foreign nationals visiting Manipur. The advisory reminds travellers to obtain a mandatory Protected Area Permit, also known as PAP, or Restricted Area Permit, REP, before entering the state. Authorities emphasize that permits must be applied for in advance via the EFRRO online portal. Foreign passengers without valid permits may face denied entry, deportation or heavy fines. Airport officials urge all visitors to complete the necessary formalities ahead of their travel to avoid inconvenience. Inspector General Sudaraj Pattilingam of the Bastar had said that the profiles of all surrender cadres had been collected and that the entire process had been going. And he also added that information would be shared as soon as it becomes available, and that the data included MOIS cadres from other states, including Telangana and Maharashtra. Pattilingam had said that authorities had expected remaining cadres to come forward through the same route, and that those surrendering weapons, renouncing violence, had been provided with facilities to lead a normal life. He had warned that any MOIS cadre of the leadership still operating in the forest and creating hindrance to life and property would be given a befitting reply, stressing that security forces were capable and the government had been determined to ensure the safety of local residents. सभी सरेंडर कैडर्स का प्रोफाइल इकट्ठा किया जा रहा है, उनका क्राइम रिकॉर्ड्स का भी अभी पूरा डॉक्यूमेंट्स की जा रही है, और उनके जितना भी प्रोफाइल और उनके ऊपर क्या इनाम है, क्योंकि इतना बड़ी संख्या में अभी जो उन्होंने सामने आए थे समाज में रीइंटीग्रेट होने के लिए, अभी पूरा प्रक्रिया जारी है, और जैसा जैसा जानकारी उपलब्ध हो जाएगा हम उसको शेयर करेंगे। और इसमें अन्य प्रांतों का भी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इस प्रकार अन्य प्रांतों को भी मॉइस्ट कैडर्स है जो इतना बड़ी संख्या में, और टॉप लीडरशिप में जैसा सेंट्रल कमेटी, दंडकांड स्पेशल जोनल कमेटी, डिविजनल कमेटी, इस प्रकार ग्रेडेड वेपन्स AK-47 इंसास, LMG, इस प्रकार ग्रेडेड वेपन्स, टोटल 153 वेपन्स, 210 माओवादी कैडर है। ये बिल्कुल एक अद्भुत जो घटनाक्रम रहा, और शासन का हमेशा इसमें मार्गदर्शन रहा, और आने वाले समय में जो हम अपेक्षा करते अन्य शेष माओवादी कैडर भी इसी रास्ते में सामने आए और
एक सामान्य जीवन जीने के लिए उनके सभी प्रकार का सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। और देवा अभी बड़ी लीडर में नाम है, इनको टैकल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज बन गया सर? जो आज सरेंडर किए हैं उनसे किस तरह से इनपुट मिलेगा उन सबको टैकल करना? शासन ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया, यदि कोई हथियार छोड़कर इनसे त्याग कर सामने आते उनका हम स्वीकार करते। यदि कोई माओवादी कैडर या माओवादी लीडरशिप अभी भी जंगल में रहते, हमारे क्षेत्र की जनता का जान माल के लिए कोई बाधा उत्पन्न करे, उनके लिए कोई रिस्क होगा हमारा क्षेत्र की जनता का जान माल का, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा सुरक्षा बल सक्षम है, शासन का इस में भी बहुत काफी एक मजबूत संकल्प है। हमारे क्षेत्र की जनता का सुरक्षा प्राथमिकता है, इसलिए बार बार हम जो अन्य जो माओवादी कैडर जिसमें बार बार नाम आते हैं, जो हिडमा है, बारसदेवा हो, अन्य जितना भी जो माओवादी कैडर से अभी भी जंगल में रहकर क्षेत्र की जनता के लिए खतरा बना हुआ, उनसे अपील है वो इनसा छोड़े, वापस समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आ जाए, अन्यथा काफी गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ेगा। दरार भी कुछ नक्सलियों के बीच। In view of ensuring free, fair and peaceful conduct of the 45 Ghastila ST Assembly by-election 2025, District Election Officer Karn Satyarthi had directed all licensed armed holders to deposit their weapons at the respective police stations. The District Election Officer stated that strict compliance with this directive is essential for maintaining law and order during the election process. He further instructed that legal action will be taken against those license holders who have failed to deposit their arms within the stipulated period. Meanwhile, Jharkhand CM Hemant Soren on Friday stated that Ghatsila by-elections process has started and Somesh Soren is JMM's candidate for the election and his nomination had also been filed. जैसे साथियों आप सब लोगों को मालूम है कि घाटशिला विधानसभा का ये उपचुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आज इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है और चुनावी प्रक्रिया के तहत आज नामांकन भी सोमेश जी ने कर दिया है और अब पूरा प्रक्रिया के तहत इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे गठबंधन के लोग एक साथ इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। सर, बूथ पे जब लोग जाएं तो उनके जहन में क्या रहे, जेएमएम क्या मतलब उनको देगी कि ये चीज दिमाग में रख के ही वोट करें? आप सबको पता है कि रामदास सोरेन जी यहाँ के विधायक हाल फिलहाल ही चुने गए थे, आकस्मिक निधन उनका हुआ, उसके पश्चात ये चुनाव यहाँ होने जा रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बात किसी को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव में लोगों ने जिनको जिताया है उनके प्रति लोगों का विश्वास है और आस्था रहा है, पहली बार ही नहीं कई बार से। तो ये घाटशिला विधानसभा नहीं, ये एक हमारा परिवार है। A salon owner in Navi Mumbai was allegedly beaten by workers of Raj Thakere's Maharashtra Nav Nirman Sena after being accused of abusing a women employee. The incident took place at a salon in Kamote where the woman had been working for several months without receiving her salary. After repeated requests went unanswered, she approached local MNS workers who then confronted the owner. A video of the assault reportedly filmed by one of the attackers shows the man slapping and punching the owner as he pleads for mercy. Police says no formal complaint has been filed so far, but they have taken cognizance of the viral video and are verifying the authenticity. This comes amid a series of recent incidents involving MNS workers, including another case in Thane earlier this week where a party worker was been seen slapping a woman during an altercation allegedly involving derogatory remarks against Marathi people.
Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the functioning of the Agriculture Department during his visit to Vidisha. Addressing officials, Chauhan said the government has decided to continue the facility of online fertilizer distribution for farmers while also ensuring an offline option for their convenience. He said that the administration will monitor the fertilizer distribution system on daily basis to prevent any irregularities. The Union Minister also discussed various development works in Vidisha and reviewed their progress with local authorities. आज विदिशा में मैंने कृषि विभाग की कामों की समीक्षा की है। आने वाली रबी की फसल की तैयारी के लिए बीज की उपलब्धता, खाद की उपलब्धता, खाद के वितरण की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है और एक फैसला आज हुआ है कि बेहतर व्यवस्था के लिए जो ऑनलाइन खाद की व्यवस्था की थी वो व्यवस्था तो जारी रहेगी, लेकिन ऑफलाइन भी खाद दिया जाएगा, क्योंकि कई चीज ऑनलाइन कैसे ऑपरेट करें इसकी जानकारी कई किसान भाइयों को नहीं है। तो उन्होंने ये कहा था कि ऑफलाइन भी व्यवस्था होनी चाहिए। ऑफलाइन भी किसानों को खाद देने की व्यवस्था की जाएगी। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री खाद आवंटित करती है, तो प्रदेश की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से वो खाद आवंटित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ की आवश्यकता का आकलन किया है, उसके अनुरूप और भी जो खाद की आवश्यकता है, वैसे खाद पर्याप्त है, लेकिन डीएपी की डिमांड ज्यादा है। तो डीएपी एनपीके सहित खाद कैसे पर्याप्त उपलब्ध हो जाए उसके बारे में यहां चर्चा हुई है। प्रशासन भी वितरण की व्यवस्था को रोज मॉनिटर करेगा, व्यवस्था रोज देखेंगे ताकि किसान भाइयों को दिक्कत और परेशानी ना हो। खाद के साथ साथ नगर की विकास के कामों के बारे में भी चर्चा हुई है। यहाँ सड़कों का निर्माण या बाकी चीजें काफी कुछ चीजें लंबित थी कई दिनों से, उस पर भी चर्चा की और भविष्य में विदिशा की जो आवश्यकताएं हैं विकास के कामों की, उस पर भी स्वच्छता सहित सब विषयों की समीक्षा की गई है। और आगे शहर स्वच्छ हो, सड़कें बने, सीवेज का जो काम चल रहा है वो भी समय पर पूरा हो जाए, उस सहित सब विषयों पर बातचीत करके कुछ फैसले लिए गए हैं। और कोशिश ये होगी कि विदिशा के विकास में भी कोई कमी ना रहे, बारिश के कारण जो दिक्कतें उनको भी दूर करें और जो डिले काम है वो भी समय पर पूरे हों और कुछ नए काम भी स्वीकृत हो, उस सब पर आज चर्चा हुई है। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.